Hi guys, this is Ishan and you are seeing my new channel Step Ahead. So guys, first of all I will give you introduction about my channel. Its name is Step Ahead and its total purpose is to study and to learn. So guys, without wasting our time, let's start with our topic, which is Rise of Christianity. So guys, first of all I will give you introduction of this topic, which says historians have divided the study of the past into periods. The periods that lies between the ancient and the modern periods is known as the Middle Age or medieval period. The word medieval comes from the Latin word medium aevum, which means middle age. It must be remembered that the medieval period did not begin at the same time in all parts of the world. Neither did the change from the ancient to medieval period happen overnight. It was a gradual process. So guys, its meaning is जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने स्टडी ऑफ द पास्ट यानी कि हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया था, एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न. तो जो पीरियड एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में आते हैं उन्हें हम मेडिवियल पीरियड कहते हैं यानी और मिडिल एज कहते हैं. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर मेडिवियल पीरियड यानी कि मिडिल एज के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले उसकी वर्ड यानी कि टर्म की ओरिजिन जान लें, जो कि है एक लैटिन वर्ड से मीडियम एवम, जिसका मतलब है मिडिल एज. और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि जो मेडिवियल पीरियड था वो दुनिया के सारे भागों में इक्वल टाइम पे शुरू नहीं हुआ था, मतलब कि सब जगह एक समय पे शुरू नहीं हुआ था, हर जगह अलग अलग समय पे शुरू हुआ था. Neither did the change from the ancient to medieval period happened overnight. It was a gradual process. मतलब कि जो एंशियंट से मेडिवल पीरियड का चेंज होना था वो ओवरनाइट में नहीं हो सकता था, वो लॉन्ग प्रोसेस था, क्योंकि उसमें कई सारी डेवलपमेंट कंट्रीज़ को गेन करनी पड़ती थी जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं कर पाती थी जल्दी. Now this was the whole introduction and now we will start with our questions. The first question is, from when to when does the Indian medieval period stretch? A. 6th century to 16th century, B. 8th century to 18th century, and C. 7th century to 17th century. So guys, as we all know that 8th century to 18th century lies the India's medieval period. So straight away here also 8th century to 18th century will be the correct option. Let's see the next question, which is, why does the 8th century is marked as the beginning of medieval period in India? Its answer will be, the 8th century is generally marked as beginning because economy, society, polity, culture and religion underwent many changes. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट कंट्रीज़ को गेन करनी पड़ती थी और वैसा ही इंडिया में भी हुआ. तो उसमें सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर और रिलीजन को कई सारे चेंजेस से गुजरना पड़ा. Let's see the next question, which is, the medieval period in Europe stretched from dash century to dash century. A. 6th century to 16th century, B. 8th century to 18th century, and C. it is 9th century to 19th century. And as we all know that Europe's medieval period stretched from about 500 century to 1500 century. So here also the correct answer will be 6th century to 16th century.
Let's see the next question. Why historians describe medieval period of Europe as a dynamic one? So, its answer will be historians describe this period as a dynamic one because social, political, economic, cultural, and religious structures were redefined and reorganized. So, its meaning is historians describe this period, मतलब जो हमारे historians थे उन्होंने इस period को dynamic इसलिए कहा क्योंकि इस पीरियड में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स नए तरीके से परिभाषित और संगठित किए गए थे यूरोप में. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is which place was conquered by Romans in middle of the 1st century? Let's see its options, which are Palestine, New York, Beijing. Here the correct option will be Palestine. Let's see the next question. Palestine was homeland of which religion's people? A. Hindu, B. Jews, and C. Islam. Here also we all know that Palestine is the homeland of Jews, so the correct option will be Jews. Let's see the next question. Who became the ruler and tortured and killed many Jews? Let's see the options. A. Herod the Great, B. Alexander the Great, and C. Emperor Constantine. So guys, here the correct option will be Herod the Great. Let's see the next question. What made the Romans unpopular? Its answer is Emperor Herod tortured and killed many Jews. This made the Romans unpopular amongst the Jews. Let's see the next question. What infuriated the Jews further? Its answer will be Romans practiced worshipping emperors as gods infuriated the Jews further. मतलब कि जो रोमन रूलर होते थे वो अपने आप को ही गॉड मनवाकर अपनी पूजा ज्यूज से करवाते थे, जो कि ज्यूज को इन्फ्यूरिएट किया और आगे तक. सो गाइज, दिस इज़ द होल टॉपिक फॉर टुडे एंड आई ऑल्सो नो दैट आई एम लीविंग इट हाफ, बट जो हमारी पूरी टॉपिक की वीडियो थी वो 20 to 30 मिनट्स की हो जा रही थी, जो मैंने कहा कि बहुत लंबी है, इसलिए मैंने अभी हाफ टॉपिक लिया है और जल्द ही आपको इसका सेकंड पार्ट भी दे दूंगा. सो गाइस, टिल देन कीप वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन तो बिल्कुल भी ना बजाना भूलिएगा, सो दैट आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए. So guys, till then, stay home, stay safe. जय हिंद, जय भारत.